who owns 140 companies in the world. Respected Hasmukh Bhai Patel ji, जैसे उनका नाम है Hasmukh Bhai, he is always Hasmukh Bhai Patel ji और MP and President of Textile Ahmedabad unit. Ahmedabad unit President Mr. T.L. Patel ji, General Secretary of Textile Association of India Mr. Mahendra Bhai, and our professors and our guru Dr. B.R. Roy Sahab, who taught me in 1970 in my IIT College Bhiwani. Now he is our knowledge partner. I, as the President of the Textile Association of India, am delighted to see an august gathering at the prestigious event World Textile Conference number 3 being organized in the Ahmedabad on a much larger scale and in a much broader format than our regular annual conference. The aim of the conference is to provide an interactive opportunity and to create a very positive atmosphere where the entire textile can take benefit by discussing, meeting and knowing each other and to enhance our cumulative strength. Under the leadership of our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the time is not very far when India will become a manufacturing hub of textiles. Today the country is progressing at a very fast speed in all fields of textile, from raw material to garment. It is all due to favorable government policies like production links, incentive scheme, increasing textile export by different trade agreements, removing barriers for Indian professionals and securing import of essential basic raw materials at international prices for manufacturing growth in India. 13 new trade agreements have been signed to promote the textile export. Now India is also one of the world's top nations in the manufacturing and trading. Multinational companies are selecting India as a manufacturing destination in line with China +1 global strategy. I will not speak on much on textile because there are so many learned speakers are there. They will tell you for 1.5. मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूं कि आदमी में बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आप देखें जंगल में सबसे बड़ा जो जानवर है वो शेर नहीं होता, परंतु शेर जंगल का राजा कहा जाता है। अगर जंगल का ऊपर सबसे ऊंचा जानवर वो होता है, वो जिराफ होता है। अगर बड़ा भारी भरकम हाथी हो, तगड़ा हाथी, उसको हाथी जानवर कहते हैं। सबसे तेज भागने वाला जानवर चीता होता है और सबसे जो चालाक होता है वो लोमड़ी सियार होता है। परंतु इनमें से कोई राजा नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी राजा बनने के लिए नहीं चाहिए, परंतु शेर राजा है। किसी ने शेर से पूछा कि भाई तुम राजा क्यों हो? वो कहता है मुझे लगता है मैं राजा हूं, मेरे में बिलीफ है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो हम सबको वो बिलीफ और पॉजिटिव एटीट्यूड लेना चाहिए। अगर कभी भी जंगल में शेर और हाथी सामने आ जाएं, हाथी कितना भी तगड़ा है, शेर उसको सोचता है आज तो मुझे भोजन मिल गया, मैं इसे खाऊंगा। हाथी सोचता है ये मुझे मारेगा। वो डिफेंसिव मोड पे हो जाता है, वो ऑफेंसिव मोड पे हो जाता है। तो हमें हमेशा बिलीफ तगड़ा रखना चाहिए। अगर हाथी चाहे तो उसको एक सूंड में घुमा के दूर फेंक दे, परंतु नहीं। तो मेरा यही एक सबको कहना है, जितने भी टेक्निकल डेलीगेट्स और सीनियर आदमी बैठे हैं, अपना बिलीफ तगड़ा कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपने एरिया का राजा ना बना सके। हमारे नरेंद्र मोदी जी देखो क्या तगड़ा बिलीफ है उनमें। उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक हम लोग इकोनॉमी $10 ट्रिलियन कर देंगे, और वो कर देंगे। और दूसरा उन्होंने बोला है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए मेरा अब ये है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जब मिले तो आप अपना सब अपने अपने एरिया के राजा बन के निकल के आए। इसीलिए जिस इंडिया को जब हम इंडिया दूसरे कंट्रियों को देखते थे, परंतु आज दूसरे कंट्री इंडिया को देखते हैं। ये सब हमारे बड़े बड़े जो हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनका बिलीफ है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं। और इसके बाद टेक्सटाइल की 2 मिनट की वीडियो है जिसमें आप सारा टेक्सटाइल का देखेंगे, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थैंक यू एवरीबॉडी, सारे डेलीगेट, सारे गेस्ट, सारे लीडर्स, सबको
हो मेरा बहुत बहुत आप ये 1.5 दिन आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाना। हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर्स फॉरेन से आए हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Vij, for all the inspiring words. Can we have a look at the ED, please? अठारहवीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सन 1741 में इंग्लैंड में पहली बार यंत्र द्वारा सूत का उत्पादन किया गया। सन 1818 में भारत में कोलकाता के पास पहली टेक्सटाइल मिल शुरू हुई। 1861 में श्री रणछोड़ दास छोटा भाई ने अहमदाबाद में गुजरात की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की। कुछ ही सालों में अहमदाबाद ने भारत के मैनचेस्टर के रूप में अपनी पहचान बना ली। भारत में बढ़ते हुए टेक्सटाइल उद्योग को गति देने के उद्देश्य से 9 अप्रैल 1939 को द टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है टेक्सटाइल टेक्नीशियंस और व्यवसायिकों को बदलती टेक्नोलॉजी से अवगत करा के उन्हें और सज्ज बनाना। 8 दशकों की अपनी लंबी यात्रा के दौरान द टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया ने पूरे भारत में 74 सम्मेलनों का आयोजन किया। सन 1940 में टेक्सटाइल डाइजेस्ट नामक त्रैमासिक पत्रिका शुरू की गई, जो 1972 में जर्नल ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन में रूपांतरित हुई। 126 संस्थापक सदस्यों के साथ शुरू हुआ द टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया आज भारत का अग्रणी और सबसे बड़ा गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है, जिसने 27 यूनिट्स और 26,000 से अधिक सदस्यों के साथ अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। 16 नवंबर 1948 देव दिवाली के शुभ दिन पर अहमदाबाद में द टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया का 6ठा यूनिट शुरू किया गया। ऑल इंडिया संस्थान के महासचिव श्री वी.एम. देशपांडे के व्यक्तिगत प्रयासों से प्रोविजनल मैनेजिंग समिति का गठन किया गया। श्री S.H. किदवानी को प्रेसिडेंट और श्री वी.एम. देशपांडे को मानद सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया। पहले दशक तक अहमदाबाद यूनिट ने मणिनगर, उस्मानपुरा और शाहपुर से कार्यभार संभाला। तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री P.H. रावल ने रुस्तम मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कांतिलाल मणिलाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पाबेन को दान के लिए प्रेरित किया। शेठ कांतिलाल के पुत्र एवं एसोसिएशन के आजीवन सदस्य दिनेश की सन 1958 में अमेरिका में कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनकी याद में 1.5 लाख रुपए की धनराशि दान की गई। श्री कस्तूर भाई लाल भाई सहित अन्य अग्रणियों ने दान के लिए अभियान चलाया। व्यक्तिगत 3 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की धनराशि से 6 लाख रुपए इकट्ठे हुए। 9 अक्टूबर 1959 को श्री P.H. रावल द्वारा 7,260 स्क्वायर यार्ड्स के विशाल प्लॉट पर 1,165.5 स्क्वायर यार्ड्स के भवन का शिलान्यास किया गया। ठीक 6 साल के बाद तत्कालीन सेक्रेटरी श्री भाईलाल भाई ए शाह और उनकी धर्मपत्नी ने वास्तु पूजन किया। 771 बैठक क्षमता वाले दिनेश कांतिलाल मेमोरियल हॉल के अलावा खुली जगह और पार्किंग सुविधा वाले परिसर का 23 मई 1965 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्लानिंग कमीशन के सदस्य प्रोफेसर M.S. ठाकर द्वारा उद्घाटन किया गया। सन 1976 में 2500 बैठक क्षमता वाले C.C. वकील ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया गया। सन 2008 में वरिष्ठ पदाधिकारियों और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने निर्णय लिया कि परिसर के कुछ हिस्से को सरकारी नियमानुसार बेचकर जो धनराशि प्राप्त हो उससे 65 वर्षीय पुराने नॉन एसी दिनेश हॉल के स्थान पर आधुनिक एयर कंडीशन भवन का निर्माण किया जाए। दुर्भाग्यवश इस बीच एक कानूनी उलझन पैदा हो गई। इस संकट काल में तत्कालीन विधायक एवं एसोसिएशन के ट्रस्टी और वर्तमान सांसद एवं अहमदाबाद यूनिट के प्रेसिडेंट श्री H.S. पटेल के अथक प्रयासों ने उलझन सुलझाई। नए दिनेश हॉल के निर्माण का मुख्य श्रेय जाता है श्री T.L. पटेल को प्रेसिडेंट के तौर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए और श्री विजय भाई त्रिवेदी को सेक्रेटरी के रूप में श्री भाईलाल भाई शाह के मार्गदर्शन में सक्षम संचालन के लिए। 2014 में नए भवन का शिलान्यास करके निर्माण कार्य शुरू हुआ।
ग्राउंड फ्लोर पर करीब 700 बैठक क्षमता वाला एसी सभागार, 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग, पहली और दूसरी मंजिल पर प्रशासन कार्यालय और मीटिंग रूम्स के साथ 5 मंजिला अत्याधुनिक दिनेश हॉल का 22 मई 2018 को स्वर्गीय दिनेश कांतिलाल की बहन श्रीमती रूपांदे शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद यूनिट ने पिछले 7 दशकों के दौरान अथक प्रयासों से 9 अखिल भारतीय टेक्सटाइल सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें 2009 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल सम्मेलन उल्लेखनीय है। द टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया की 80वीं सालगिरह के अवसर पर एक दिवसीय टेक्सटाइल सम्मेलन भी आयोजित किया। अहमदाबाद यूनिट एटीए और जीएमटीए की परीक्षा के लिए व्याख्यान आयोजित करता है और पुस्तकालय भी चलाता है। भारत और विदेशों में औद्योगिक दौरों का आयोजन, श्री बी शाह एजुकेशनल वेलफेयर फंड के माध्यम से सदस्यों के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाना, मेधावी छात्रों को मेडल देकर प्रोत्साहित करना, प्रसंग अनुसार सोवेनियर प्रकाशित करके यूनिट की गतिविधियों, उपलब्धियों आदि का दस्तावेजीकरण कर लोगों तक पहुंचाना, सदस्यों के परिवारों के लिए पारिवारिक मिलन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह भोजन का आयोजन इत्यादि प्रवृत्तियां करना है। सन 2019 से 2022 दौरान अहमदाबाद यूनिट ने नियमित प्रवृत्ति के अलावा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू, टेक्सटाइल स्टूडेंट की इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ समन्वय, उनको इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रूल्स और रेगुलेशन का प्रशिक्षण देना, एसोसिएशन के सदस्य बनने को प्रोत्साहित करने जैसे कार्य किए। कोविड काल में वेबिनार के माध्यम से मीटिंग्स और शिक्षा कार्य का आयोजन किया। कोविड महामारी के दौरान सदस्यों के लिए मुफ्त कोविड चेकअप कैंप्स, दाल चावल, खाद्य तेल का रियायती दर पर वितरण, उनके दिव्यांग को आर्थिक सहायता एवं 75 साल के सेलिब्रेशन के भागरूप चांदी के सिक्कों का उपहार देने की उल्लेखनीय कार्यवाही की। अहमदाबाद यूनिट की वेबसाइट www.taiahd.com के माध्यम से सदस्यों और अन्य जिज्ञासुओं को यूनिट की प्रवृत्ति के बारे में सूचित किया जाता है। यूनिट के लगातार अच्छे प्रदर्शन की टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोट ली गई है। साथ ही यूनिट के प्रेसिडेंट श्री टी.एल. पटेल के नेतृत्व में 3 बार हैट्रिक बनाकर बेस्ट यूनिट ट्रॉफी जीती है। प्रथम हैट्रिक वर्ष 1996, 97 और 98, दूसरा हैट्रिक वर्ष 2005, 6 और 7, तीसरा हैट्रिक वर्ष 2011, 12 और 13। अहमदाबाद यूनिट की 7.5 दशक की इस यात्रा के दौरान अधिकांश पदाधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता साबित करके सर्विस गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इस सफल यात्रा के दौरान डॉक्टर विक्रम साराभाई, श्री कस्तूरभाई लाल भाई, श्री अरविंद लाल भाई, श्री पी.एच. रावल, श्री आई.एम. भंडारी जैसे कुशल दूरदर्शी महानुभावों का योगदान उल्लेखनीय है। 1948 में श्री सी.एल. शर्मा के बंगले के गराज में 144 सदस्यों के साथ शुरू हुआ अहमदाबाद यूनिट आज 5 मंजिला अत्याधुनिक दिनेश हॉल में 4,393 सदस्यों की विशाल संख्या के साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया के दूसरे सबसे बड़े यूनिट के रूप में कार्यरत है, जिसके पीछे प्रथम प्रेसिडेंट श्री एस.एच. किदवानी से लेकर वर्तमान प्रेसिडेंट श्री एच.एस. पटेल सहित सभी पदाधिकारियों का निष्ठापूर्ण प्रयास जिम्मेदार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विचार सूत्रों जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट और मेक इन इंडिया को आत्मसात करके टेक्सटाइल उद्योग के विकास के माध्यम से देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया अहमदाबाद यूनिट प्रतिबद्ध है। A round of applause, ladies and gentlemen. What a spectacular journey it has been. To begin with, we would like to present flowers and memento to our guest. I would request Mr. R.K. Vich kindly come forward and present flowers and memento to our chief guest, Shri Bhupendra Bhai Patel, our chief minister. Can we have round of applause, ladies and gentlemen?
It's a token of love, sir, from Textile Association India. I would request Mr. H.S. Patel kindly come forward and present flowers and memento to Srimati Darshana V. Jardosh. Let's join our hands, ladies and gentlemen. Thank you so much, ma'am, for gracing this occasion. I would request Mr. T.L. Patel kindly come forward and present flowers and memento to Sri Uday Gill, the Executive Director, Indorama Ventures Limited. Thank you very much. I would request Mr. Mahendra Bhai G. Patel kindly come forward and present flowers and memento to Sri Puneet Lal Bhai, Executive Director, Hon'ble Limited. Let's join our hands, ladies and gentlemen. Thank you. I would request Dr. P.R. Roy kindly come forward and present flowers and memento to Sri H.S. Patel, President, Textile Association India, Ahmedabad Unit, and Member of Parliament. Thank you very much. Now allow me to welcome Mr. Puneet Lal Bhai. As we all know him, he is the Executive Director of Hon'ble Limited and leads Hon'ble's manufacturing businesses, which include core textile, advanced materials, engineering and agri businesses. He also spearheads initiatives in sustainability, CSR and innovation at Hon'ble. He has an MBA from INSEAD, France, and Masters in Environmental Science from Yale University, USA. Mr. Puneet has been the practitioner of heartfulness meditation since 1998 and has been a volunteer trainer for the practice since 2012. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause and welcome Mr. Puneet Lal Bhai. Respected Upendra Bhai Sahib, respected Darshana ma'am, all the dignitaries on the dais, friends. It's a pleasure to be here today to give the address around where the textile industry is today. It wouldn't be wrong to say that we are at a complete inflection point. And textiles, which has largely remained unchanged for the better part of the last century, is about to see a lot of changes. So very quickly, I'm going to take you through the key pillars that represent this big change and that also present a huge opportunity for India. So there is change afoot everywhere you look. And the biggest sort of feature that has dominated our industry is how big China has been. However, over the last 2 to 3 years, and for the foreseeable future, we see China vacating its dominant position in textiles. जो चाइना का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आप देखिए कि चाइना is almost $300 billion of the textile trade, whereas India is around 40 to 45. So there is a huge gap between China and the number 2. And since China is vacating, this represents a massive opportunity for India to take advantage.
And I don't like the term China plus one. Everybody uses this term China plus one. We don't want to be plus one. We want to be the dominant player in the world, and we have all the ingredients to be that. और अगर हमें ये करना है तो there are two things to become that we need to focus on going forward. One is vertical integration. We've been very strong on yarn, we've been very strong on fabric, but now we need to get that dominance on garments as well. Bangladesh and Vietnam have succeeded in doing that, but in all my conversations with buyers, they are saying that we are saturated in Bangladesh, we are saturated in Vietnam, we are looking for more capacity from this part of the world. And India has to rise to the occasion, and I'm very happy to say that the state governments, especially the state of Gujarat, the central governments, are coming up with all kinds of policies to help us do that. So us entrepreneurs have to rise to the occasion and develop this missing link for us to dominate the textile industry. The second huge opportunity is technical textiles, which I will talk about a little more. MMF and technical textiles. Huge amount of innovation is happening there. Huge amount of progress on polymers, on fibers, on applications. So there is no, and with the kind of intellectual firepower that the scientists of India have, the managers of India have, today, there are so many heads of Fortune 500 companies that are Indian. There is no dearth of talent in this country. And so I do not believe that there is anything short of dominance to be had, even in the technical textile space. Now there is another major change that is happening around the supply chain. First, there used to be a nomination model. You know, big brands like Gap or Levi's would say, I will buy fabric from you. Please send it to this garment converter in Bangladesh, and this is my logistics and forwarding company. Now the change that is there is that brands are looking at us, at the supply chain, to do everything. You design the product, you tell me what is going to sell in the future, you manufacture it all the way from sourcing the fiber to making the finished garment. You handle my logistics, you keep a warehouse in my market, and you stock my shelves when I need it. And the players that are going to be able to do that are going to win more and more. And I think this is going to even come to the Indian domestic market. So increasing our strength across the supply chain is going to become important, whether we are a very large company or even a small MSME. We'll have to change our thinking. Gone are the days that we can just put one loom shed and expect that will give us return. So we will have to keep pace with this change. Also, with automation, innovation coming in, Asia alone as a manufacturing hub is going to change. We're already seeing with fast fashion players like Zara having supply chains around the Mediterranean region. So nearshoring is happening. There are 2 garment factories as we speak, one in France and one in Germany, that are going to make denim garments because of highly automated lines. So all this change, we will have to keep one step ahead of it. Consumer is also changing. 5 years ago, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कपड़ा छुए बिना खरीदा जा सकता है. Textiles was a very touch and feel kind of buying experience. But now almost 30 to 35% of all textile buying or all garment buying happens online. And this has been a sea change. And this represents automation, fast replenishment, last mile value addition. All these opportunities are available because the consumer is thinking differently. Consumer is also now thinking about things like sustainability. They are thinking about stories. Initially, a good product
was all that you needed. Then you had the logo that signified affluence. Now you have Instagram likes and what your friends think about you in those clothes on social media. So this whole transformation is happening, and if we don't keep the consumer in mind and adapt our business model to the changing needs of the consumer, there is a chance to be left behind. So we need to think very deeply. Is our manufacturing telling a good story? Is it planet positive? Does it cater to the needs of the next generation who on one side of the pole, on one pole, love fast fashion, and on the other side are deeply wedded to sustainability? So it is a very complex landscape, and we will have to navigate this complex landscape. Cotton, which has been India's very, very strong positive, is losing somewhat its prominence in the world. Of course, it will always be relevant, but the innovations coming in man-made fiber are happening at such strong pace, and they lend themselves to circularity, to durability, to higher functionality, that we can no longer only depend on cotton. So we need a two-pronged strategy. On one side, we need to adopt MMF. And I think the government is doing a great job. They've come up with a lovely PLI policy that is encouraging investment into man-made fibers-based manufacturing. Also, technical textiles is full of man-made fibers. So, taking advantage of the strong will on the part of the government to better our position globally on MMF must be taken advantage of. And we have to, as industry, shed our inhibitions and our affinity to only cotton. That is one side of the story. The other side of the story is to improve our cotton supply chain. We need to do a lot of work with farmers, with agriculture, with better seed quality, with higher yields. India's productivity is on the low side. We need to become the most productive farm landscape for cotton if we are to remain competitive. So this two-pronged strategy with the fiber mix that is changing globally is extremely important. This is a topic very, very close to my heart, sustainability. I have 2 degrees in ecology, and I follow this subject very closely as part of many global organizations and their boards. And if you look on current trajectory, we are almost going to miss our carbon reduction target by 50%. There is a target given to each industry that you have to reduce carbon by so much by 2030 so that the global temperature doesn't rise beyond 1.5 degrees. On current trajectory, we are going to miss it by 50%. And I think this is an opportunity too, because the companies that prepare for this first and the geographies that prepare for this the first, there's already a legislation in Europe where traceability is going to become paramount. And what happens in Europe or what happens in America follows after some time in India also. So sustainability is going to become important to the next generation of India. If I'm speaking to college students, school students, they really care about this. And so for us to leave the planet in as good, or at least not in worse shape than what we found it, becomes paramount. And textile industry, after steel and power, is one of the most carbon and water intensive industries globally. So we have a lot of work to do, and we all need to come together and not ignore this fact. Again here India, in terms of its legislative framework, is strong. I mean, ZLE is mandated in so many places. So we have a head start. And brands are looking at us more favorably. The global consumer is looking at us more favorably than many other manufacturing locations
from this ESG perspective as well. So this is a huge opportunity. And then finally, I'll club technology, innovation and technical textiles. There is so much advancement in digital, in machine learning, in augmented reality, in green chemistry, that we are now starting to see fundamental shifts. There are technologies available which skip entire steps. You can go directly from yarn to a garment. You can dye fabric without using water. Things that we would have thought were science fiction 10 years ago are now possible. So, for the Indian entrepreneur, for Indian industry, we should take the lead in adopting this. Today, MMF, the home of MMF is considered to be Taiwan, Korea, Japan. I think we have more intellectual firepower, and we must take that mantle of being the leader in innovation in textiles, and especially in technical textiles. And the opportunity is massive. Yesterday only we were discussing that today India's export in technical textiles is only 2%. So we are starting from a very small base. But I believe that we are a sleeping giant. And if we do 4 things well, build verticality, focus on sustainability, embrace man-made fibers, and think about technical textiles. And technical textiles take some time, but the rewards, in my own experience, having invested early, are disproportionate once you have waited out that initial period. So if we do these 4 things, plus we have a government that is very, very focused, never before has so much attention and effort been given to textiles. We have the National Technical Textile Mission. We have the PM Mitra of making these large industrial parks where a whole ecosystem of manufacturing will be available. There is PLI. There is huge amount of funding for training and talent development. So the invitation is that please take advantage of all this great enabling environment, both at the center and at the state. And let us all together make India not China +1, but India as a dominant player in the textile industry. Thank you very, very much. Jai Hind. Thank you very much for sharing the insights, sharing the knowledge, Mr. Punit Lal Bhai. Thank you. Moving on to our next session, which is the award presentation. There are few very important awards that we would like to present, and for that I would request our chief guest, CM Sir, kindly come forward. First of all, the honorary membership award goes to Dr. Seshadri Ramkumar. Can we join our hands, ladies and gentlemen? He is a professor, Texas Tech University, USA. CM सर को रिक्वेस्ट करेंगे अवार्ड्स देने के लिए. I would also request Darshana ma'am, please join. Dr. Seshadri Ramkumar, Professor, Texas Tech University, USA. The next award, Honorary Fellowship Award, goes to Dr. M.S. Parmar, Director, Nitra. Let's join our hands, ladies and gentlemen. The next service gold medal goes to Shri H.S. Patel, President, Thai Ahmedabad Unit, Member of Parliament. I would request Srimati Darshana ji,
please hand over the next award to Mr. V.A. Bhajikar, Managing Director, Global Organic Textile Standard, GOTS. He is not present right now. On his behalf, I would request Mr. Rajiv Ranjan, President, Ahmedabad Unit, kindly come forward. Congratulations. I would request Dr. A.I. Thakkar, Head Department of Textile Technology, kindly come forward. The award service mementos goes to Dr. A.I. Thakkar. The next award, which is the Best Unit Trophy, goes to Ahmedabad Unit. All office bearers kindly come on the stage to receive the award. Congratulations to the entire team. Thank you. The next award is for award to Young Industrialist, and that goes to Sri Punit Nalbhai, Executive Director, Ahmedabad Limited. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Congratulations. All right, now this is the moment we all have been waiting for. Allow me to welcome the men with simplicity yet high values and moral, how to live life, giving the inspiration to not only everyone, but especially the youth of the nation. Ladies and gentlemen, put your hands up, put your hands together for none other than the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Okay, there is a little change in the flow, but it is definitely an honor for us to have Darshana ma'am. Well, she doesn't need any introduction. She is my role model, I must say. Every time when I invite her, she has a great smile on her face, and what a graceful personality she is. Wearing 6 yards of clothing and giving the great example to the youth, especially the girls out there. Thank you so much, ma'am. The stage is all yours. Thank you. टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है
गुजरात के लिए 156 सीट का एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। शायद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में टेक्सटाइल के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। और आर.के. वीर जी जो अभी स्टोरी बता रहे थे लायन की, तो मैंने उनसे परमिशन ले ली है। शायद कि हमारी बातचीत हिंदी में होगी तो अच्छा कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग। वैसे तो अहमदाबाद में कार्यक्रम होता है तो गुजराती सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। जब से प्रधानमंत्री जी और अमित भाई दिल्ली आए हैं तो सब लोग केम छो मजामा छो करता थया छे। जिनके आग्रह से मैं यहाँ पे आई हूँ, अहमदाबाद एसोसिएशन जिनको अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे, और पूरे 26 एसोसिएशन में से बेस्ट एसोसिएशन के नाते मेरे सांसद के साथी और जो अहमदाबाद की इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। और कल भी हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल में उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि अहमदाबाद को टेक्निकल टेक्सटाइल में कैसे मैं टॉप पर ले जाऊं। आज भी उनकी सोच यही है। तो एक बार एच.एस. पटेल जी के आग्रह से यहाँ पे हम लोग दोनों उपस्थित हुए हैं। ये पटेल वाइस प्रेसिडेंट, पुनीत भाई जिनको अभी यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल चुका है। उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मैं मंत्री बनी उसके बाद में तय हुआ था कि गुजरात में जो टेक्सटाइल का सेक्टर अनऑर्गेनाइज है, तो चैम्बर ऑफ गुजरात ने बहुत अच्छे से एक 5-6 सक्सेस स्टोरीज के लिए सबको इनवाइट किया था कि कैसे इंटीग्रेट होके लोग एक दूसरे से सपोर्ट से अपने एक्सपीरियंस से वो बातें शेयर करें जिनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग आगे ले जाने में सफल हो पाए। और कल भी जिस तरह से हमारे मिनिस्टर पीयूष जी के साथ हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा था सीईओ के साथ में, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अमित भाई भी यहाँ पे बैठे, अग्रवाल जी, पुनीत जी भी आए थे वहां पे, तो बहुत अच्छा आउटकम निकला। अमृत मंथन जैसे अमृत काल, आजादी के अमृत काल में 100 साल बाद 47 इयर्स आजादी के बाद में जो भारत का होगा आत्मनिर्भर भारत की ओर, उसको ले जाने के लिए कौन से सेक्टर में कैसे सपोर्ट चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने जब सोचा तो अपने विचार उन्होंने आइडियाज बहुत अच्छे तरीके से रखे। जो इंडस्ट्री चाहती है या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से हम लोगों ने सोचा है, और भी डिग्निटरीज है, एम.एस. पटेल जी डायरेक्टर इंडोरामा के, जो भी यहाँ पे आपके और पूरे जो आपका सेशन चलने वाला है, इसमें आगे वाले समय में आप लोग बहुत कुछ अमृत मंथन निकाल कर इसमें से आउटकम सरकार को मदद रूप हो जाए ऐसा आप कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की सोच यही थी कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उनको फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होता है। जिस तरह से पुनीत भाई ने अभी बताया, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड में हम लोगों की, इंडिया की इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, तो उसको किस तरह से बेस्ट क्वालिटी के कॉटन के साथ में, और हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है, और खास करके अहमदाबाद जो मैनचेस्टर जो उनकी स्टोरी बताई गई कि पहले जितनी भी मिल वगैरह थी वो कॉटन के ऊपर डिपेंड थी, और कॉटन की क्वालिटी के साथ में हम कैसे कम्पीट कर पाए। और इसमें मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जिस गुजरात को छोड़कर नरेंद्र भाई गए थे और वहां पे जो सेक्टर में सबसे ज्यादा करने की जरूरत थी, तो स्पिनिंग से लेके कॉटन का ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री के साथ जब भी अभी डिस्कशन हुआ तो सबसे ज्यादा रोल कॉटन के लिए भी गुजरात महाराष्ट्र का रहा। तो गुजरात में जो इकोसिस्टम डेवलप हुई है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की बनती है, उसमें टेक्सटाइल कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे राज्य सरकार उनका रोल अपना निभाएंगे, तो बहुत अच्छे से आगे हम दोनों साथ में मिलजुल कर आप लोगों के लिए काम कर पाते हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस हम लोगों ने किया है मैनमेड फाइबर के ऊपर, जो पूरे देश में हम लोगों का रोल 25% ही है ग्लोबल मार्केट में, और इसको 75% तक ले जाए। पूरी दुनिया मैनमेड फाइबर 75% यूज करती है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत पीछे थे। तो इसके लिए जो योजना बनाई गई, मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, 3 सेक्टर के ऊपर फोकस करके सरकार ने जो पीएलआई स्कीम बनाई, और पीएलआई स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए,
अच्छे से बड़े प्लेयर्स आए और उसके साथ में हम लोग क्वालिटी प्रोडक्शन से, इकोसिस्टम से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करके कैसे आगे हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी कर ली। और 10,863 करोड़ की जो पहली पीएलआई स्कीम आई, जिसमें 67 प्लेयर्स आए, और मैं बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, 7 प्लेयर्स इसमें से गुजरात के हैं, तो गुजरात कहीं पे भी पीछे नहीं है। दूसरा, जो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए अभी जो दोनों लोग अभी चिंतित है, पुनीत जी और हसमुख जी, और जिसका कल भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, तो उसके लिए भी सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल के 11 कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा रोड के लिए बनाए जाने के लिए रेलवे में यूज होगा, जियो टेक्सटाइल के यूजेस कैसे बढ़े, मेडिकल में कैसे बढ़े, मेडिकल यूज के साथ में कल डायपर्स वालों की भी बहुत सारी डिस्कस हुई, क्योंकि हेल्थ केयर में जैसे हम लोग पीपी किट में कोविड के बाद में हम लोगों ने शुरुआत ही करी थी, लेकिन 2 साल में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बन गए, तो इतना प्रोग्रेस हम लोगों ने कर लिया है। और इसके साथ तीसरी जो बात आती है, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कैसे जमीन में पानी कम हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे मछुआरे जो है उसकी नेट में कैसे उसका यूज हो, स्पॉट्स में सबसे ज्यादा जो फील्ड अभी दिखता है, एक प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कॉटन, हम सरकार की सोच यही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ऐसी थी, फार्म, तो फार्म से कॉटन, फार्म से फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू 5F के बेस पे हम लोग काम करते थे। तो इसमें जब वेलवेट फाइबर की या टेक्निकल टेक्सटाइल की बात आती है तो कॉटन बेस बहुत कम रह जाता है, तो फाइबर से शुरुआत होती है, तो उसके लिए पॉलिसी बनाना, इसके लिए जो इंपोर्ट चीफ चाहिए या उनको जो सरकार का सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत करके हल निकालना, यही एक सरकार की सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ, कामयाबी है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स है, जो अपने जमीन के ऊपर जो फील करते हैं, उसमें उनको क्या चाहिए, कैसे सिस्टम चाहिए, और पीयूष जी बार बार बोलते हैं कि सरकार का इंटरव्यू सबसे कम होना चाहिए। जैसे जीएसटी के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया, सूरत से जितना एपी सेंटर हुआ, क्योंकि अभी कपड़ा हमेशा एग्जाम्प्टेड रहता था, तो लोग टैक्स के दायरे में आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से स्ट्रीमलाइन हुई, वैल्यू चेन हुई, एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं, तो सब लोग साथ मिलकर अगर काम करेंगे, जितना सरकार का रोल कम होगा, इतना आप लोगों को आसानी होगी आने वाले समय में जो ग्लोबली मार्केट हम लोग को कैच करना चाहते हैं। इसके लिए पूरी रोड टैक्स की और जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी टैक्सेस है सरकार के, इसके लिए भी हम लोगों ने मार्च तक ये डेट बढ़ा दी है। सबसे पहली बार ये अमृतकाल बजट के अंदर एक वर्ड यूज किया गया प्रधानमंत्री के माध्यम से, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा इसलिए आता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की चीज, जो हम टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा लोग को रोजगार देने के लिए हम लोग आगे आए हैं, तो इसके साथ में कैसे उनको भी जस्टिफाई करें। और ऐसे समय में जब G20 के समिट में हम लोग, गुजरात इतना नसीब वाला है कि 4 इवेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अहमदाबाद की शुरुआत हो चुकी है, कच्छ ऑफ रण में भी हुआ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में होगा, एक इवेंट सूरत में होगा, तो चारों जगह पे G20 का फोकस है। जब शोकेसिंग होने जा रहा है तो 56 जो अपने बड़े बड़े शहर है, इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह जहां जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का जो समय आता है वहां हम दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में पूरा नेशन एक साथ में आगे बढ़े, एक परिवार की तरह। तो ये लोगों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें जो सपोर्ट मिलता है वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन को। अब तक की जितनी भी इवेंट राजस्थान में हुई, मुंबई में हुई, गुजरात में हुई, आप लोगों ने देखा होगा कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजों से जो हमारे जो फॉरेनर आते हैं, जो विदेश से लोग आते हैं, 20 कंट्री से लोग आते हैं, वो काफी उनको पसंद भी करते हैं, और उनको कैसे प्रोजेक्ट में के साथ में हम शामिल करके उनको भी एक अच्छा जीवन दे पाए। तो विश्वकर्मा के नाम से एक MSME, छोटे छोटे सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है टेक्सटाइल के साथ में, और मैं अशोक भाई को धन्यवाद भी दूंगी कि यहाँ पे एलडी इंजीनियरिंग के साथ में उन्होंने टाइप किया है कि नए जनरेशन
किस तरह से इस फील्ड में आए। टेक्सटाइल के पहले बहुत सारे कोर्स होते थे, लेकिन इस कोर्स में धीरे धीरे इसमें जिस तरह से एक स्टैंडर्ड आ गया, लोग एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखने लगे, जिस तरह से अपना रिसर्च सेंटर भी खुद बना लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी खुद ऐसा कर लिया। लेकिन अगर बड़े सेक्टर को आना चाहिए तो किस तरह से इंजीनियरिंग के साथ में जुड़े हुए हमारे IIT IIM के साथ में कल ये चीज टेक्निकल टेक्सटाइल की वहाँ वो भी डिस्कस हुआ कि किस तरह के कोर्स हम लोग करेंगे, जिसमें सभी यूनिवर्सिटियों को भी लेटर दिया गया है। रिसर्च के लिए भी जो हमारा बजट 400 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ का कर दिया गया। तो पूरी फोकस इंडस्ट्री के साथ में हम लोग लेकर आगे चलते हैं। तीसरा जो रेडीमेड गारमेंट्स, तो रेडीमेड गारमेंट्स में भी बहुत सारा स्कोप है। हम लोग बांग्लादेश की बार बार बात करते थे, लेकिन हम लोगों ने बात इसलिए क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री की जो हालत अभी आपने देखी है, खास करके जो हमसे जो पिछड़े थे पहले, तो वहां पे जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है और हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वें नंबर की इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। और जब एक्सपोर्ट का टारगेट 400 बिलियन का अचीव करना था, पिछले साल हमने 15 दिन पहले ये एक्सपोर्ट हम लोगों ने अचीव कर लिया। और इसमें हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर को जोड़ा जाए, जिसमें सबसे ज्यादा महिला होती है, जो घर पे बैठ के खेत के साथ साथ में घर पे भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम करती है। तो उसको आर्टिजन कार्ड बनाना, उसको एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर देना, एक जैसे काम करने वालों का क्लस्टर इकट्ठा करके उसके साथ में उनको सपोर्ट करना। अहमदाबाद में अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा बारिश के पास में जो एप्लिक वर्क वाला एक सेंटर का ओपनिंग अभी हम लोग थोड़ी समय के बाद में, जैसे मुख्यमंत्री जी का टाइम मिलेगा, हम लोग खोलने जा रहे हैं साबरमती आश्रम के पास में। तो एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक जैसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो यूपी के अंदर भी ये बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा। स्टेशन के ऊपर भी किस तरह से एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से कैसे सपोर्ट करे, तो हम लोगों ने आजादी का अमृत काल में 75 स्टेशन के ऊपर छोड़कर 750 स्टेशन के ऊपर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट वाले लोगों को अपना एक स्टॉल मिल जाए। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही लोगों को ये स्टॉल मिलता रहे, हर 15 दिन 30 दिन के बाद में नए लोगों को इसमें मौका मिलता रहे। इस तरह से हम सिस्टम को एडॉप्ट करके आगे चल रहे। तो ज्यादा मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने भी अवॉर्डी हैं, आप लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करके अपने मेंबर्स को किस तरह से इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए आप लोग आने वाले समय में हमें मदद करने वाले हैं और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। और इसके साथ में चौथी जो हमारी जैसे रेडीमेड गारमेंट का मैंने बताया कि इसमें भी ऑनलाइन कोर्सेज और एक ट्रेनिंग और है जो इंडस्ट्री से हम लोग सपोर्ट चाहते हैं कि इंडस्ट्री वाले लोग अगर कोई महिला को या उसको रोजगार देना चाहते हैं या तो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, तो बहुत सारी ऐसी मशीनरी आएगी जिसको आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए समर की ट्रेनिंग है, जिसमें इंडस्ट्री अगर ट्रेनिंग करेंगे उसका हमारे पार्टनर से जुड़ जाएंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है। और समर ट्रेनिंग के अंदर और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और सिल्क मैं फिर से भूपेंद्र भाई को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर जितना R&D का काम हो रहा है, जितना हम टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं आपके सपोर्ट से। और दूसरा इसमें जो तीसरा एक कंपोनेंट रह जाता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, सिल्क के बारे में, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे सिल्क की प्रोडक्ट और कोकून लाए थे तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आए थे, लेकिन इसके बाद में उसको कर्नाटक में जैसे 4 से 5 क्रॉप लेके हम लोग सिल्क के प्रोडक्शन में भी बहुत आगे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को भी वेस्ट और ईस्ट दोनों का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, इसकी तरह वहाँ पे भी गवर्नमेंट से आसाम गवर्नमेंट ने बोडोलैंड के साथ में हमने MOU साइन किया है कि जहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जो अपने आदिवासी एरिया के अंदर वो कोकून का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो सरकार गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। वो अभी पुरानी टेक्निक से काम कर रहे हैं तो उनको टेक्नोलॉजिकल मदद मिलेगी, अच्छे से नए हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के इक्विपमेंट मिलेंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मार्केट मिलेगी। मार्केट को जोड़ने के लिए सरकार ने सबसे अच्छी बातें करी है जेम पोर्टल से जोड़ना, और जेम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए भी गुजरात गवर्नमेंट हमेशा अग्रसर रही है कि जितने भी जेम पोर्टल से हम लोग अपनी चीजों
या तो आप रेलवे में कुछ करना चाहते हैं, या तो टेक्सटाइल में करना चाहते हैं, या तो कोई भी सेक्टर में। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय की छोटी से छोटी चीज भी अगर खरीदना चाहते हो तो जेम पोर्टल के माध्यम से, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को हम लोग सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो सिल्क में भी सबसे पहले ये मुख्यमंत्री की सोच थी जब नरेंद्र भाई यहाँ थे कि मेरे डांग के आदिवासी एरिया के लोग क्यों कोकून का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो इसमें भी यहाँ पे 9 साल के अंदर ये सक्सेस स्टोरी हो चुकी है। और यहाँ पे भी डांग के अंदर नवसारी के पास में 3-4 एकड़ में सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो सिल्क, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, मैनमेड फाइबर और इसके साथ में टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और एक इंडस्ट्री और छूट जाती है जो बार बार जूट इंडस्ट्री, जो पश्चिम बंगाल बिहार साइड के लोगों को, तो इसमें भी साउथ के एरिया के लोगों को जोड़कर, क्योंकि जूट में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को जोड़कर और उनकी प्रोडक्ट को हम लोग जिस तरह से फूड के लिए हम लोग उनको सिक्योर करके वो इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, लेकिन टेक्निकली जितना अपग्रेड उनको होना चाहिए उतना हुए नहीं है, तो उनके लिए भी एक पूरा फोकस करके एक स्कीम बनाई गई है। तो मैं आज फिर से धन्यवाद दूंगी। एक टेक्सटाइल का एक मंच जो अहमदाबाद के मैनचेस्टर में आयोजित किया गया है, वहाँ बहुत अच्छे से आप लोग आजादी के अमृत काल में 75 साल वाले भारत की शुरुआत, क्योंकि नई जनरेशन, पुनीत भाई जैसे लोग, नई जनरेशन वाले लोग 100 साल के बाद वाला भारत देख पाएंगे। हम लोगों को नहीं पता कि हम में से कितने लोग 100 साल की सेलिब्रेशन में हाजिर रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी जो मैं हर एक जगह पे सुनाती, कई लोगों ने सुनी होगी लेकिन मुझे बहुत पसंद है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने समझानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। कैन डू जनरेशन जो सब कुछ हासिल कर सकती है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। Thank you very much, ma'am, for all the sharing all the insights and blessings and inspiring words. Now, I think this is the moment. Allow me to welcome the chief guest himself. एक बार जोरदार तालियों થઈ જાય, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया द्वारा आयोजित વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ કોન્ફરન્સ 3ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય કાપડ તથા રેલ રાજ્યમંત્રી શ્રી દર્શનરેન જરદોસ, सांसद श्री एच.एस. पटेल, एसोसिएशनના અધ્યક્ષ શ્રી આર.કે. વીજ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ટી.એલ. પટેલ, અરવિંદ ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર શ્રી પુનીત લાલભાઈ, इंडोरामा ग्लोबल ग्रुपના ચેરમેન શ્રી ઉદય ગિલ, જનરલ સેક્રેટરી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, સમગ્ર દેશમાંથી વિદેશમાંથી પણ છે, દેશ અને વિદેશમાંથી પધારેલ ટેક્સટાઇલ જગતના સૌ અગ્રણીઓ, આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। विश्वना सौथी लोकप्रिय અને આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત દેશ અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે અને જ્યારે અમૃતકાળ
અને એ અમૃતકાળનું સૌથી મોટું બજેટ ગુજરાતે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગઈકાલે જ ગુજરાતનું સૌથી મોટું બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું છે. બજેટ અમારું ખૂબ સારી રીતે કે ગુજરાત અને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા અને આખી વિકાસની રાજનીતિનું નવું અધ્યાય માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં શરૂ થયું. અને આજે જયારે અહીંયા બહેન આજે કવિતા વાંચતા હતા તો એ કવિતાના આધારે આપણે કહી શકીએ કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી, કેટલા કોન્ફિડન્સથી એમણે શરૂ કરી હશે કે આજે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જે પહેલા આપણે જે ઇલેક્શનો જોયા છે તો એ ઇલેક્શનોમાં કેવી રીતે ઇલેક્શન થતા હતા, એના શું મુદ્દા રહેતા હતા, અને આજે તમે આખા દેશમાં ગમે તે રાજ્યમાં નાનામાં નાનું ઇલેક્શન હોય તો એનો મુદ્દો આ વિકાસ ઉપર આવી, ડેવલપમેન્ટ ઉપર આવી, અને એ ડેવલપમેન્ટને ભાર મૂકી અને ગુજરાતે જે વિકાસ ગાથા શરૂ કરી અને આજે એ વિકાસ ગાથા આપણે અમૃતકાળમાં સૌથી અગ્રેસર રહેવા માટે ગુજરાતે એ આ વર્ષના બજેટમાં 5 વર્ષ માટેનું આખું વિઝન કે ગુજરાત કેવી રીતે આગળ વધવા માંગે છે એ આપ્યું છે. અને જ્યારે કોરોના જેવી મહામારીમાં પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આત્મનિર્ભર ભારત અને આત્મનિર્ભર ભારતની સાથે આજે આર્થિક રીતે 5મા સ્થાન ઉપર જ્યારે બીજા બધા દેશો પોતાની પોઝિશન ટકાવવા માટેની મથામણમાં હોય એવા સંજોગોમાં આપણે આગળ વધતા હોઈએ એ આપણી પાસે આજે નેતૃત્વ છે અને એ નેતૃત્વનો લાભ લઈ અને આપણે સૌ આગળ વધવા માંગીએ છીએ. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રે આજે ઘણા બધાને અહીંયાથી એવોર્ડ મળ્યા છે. દરેકે જુદી જુદી બ્રાન્ચ કહી શકાય તો બ્રાન્ચમાં બધાને જુદા જુદા એવોર્ડ આજે મળ્યા છે. ટેક્સટાઇલ આગળ વધવા માટે સરકાર તરફથી કોઈ મુશ્કેલી ના પડે એ જોવાની જવાબદારી અમારી છે. માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ વાઇબ્રન્ટ શરૂ કરી અને દેશ અને દુનિયામાંથી વેપાર ઉદ્યોગ માટે અહીંયા ખૂબ મોટી સ્પેસ આપી ગુજરાતમાં. અને આજે તમે જુઓ તો આજે વાઇબ્રન્ટમાં અમારે પણ ક્યાંક ફોરેન જવાનું થાય તો એ ફોરેન જઈએ ત્યારે દરેક જણને, દરેક દેશને, વિદેશમાંથી પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત સાથે વેપાર વધારવો છે, ધંધા રોજગાર વધારવા છે, અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. અને ઇન્ડિયામાં જયારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે અને જયારે ઇન્ડિયા આવે છે ત્યારે પછી કયા રાજ્યમાં જવું, ઇન્ડિયા આવ્યા પછી, તો આજે પણ સૌથી ફેવરેબલ જો કોઈ રાજ્ય હોય તો એ આજે ગુજરાત છે. અને આ મજબૂત પાયો આપણે અહીંયા નાખ્યો છે ત્યારે જે અહીંયાથી ટેક્સટાઇલ માટેની વાત છે તો ટેક્સટાઇલ સૌથી જૂના ઉદ્યોગોમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ આવે છે. બદલતા જમાનાની સાથે ઉભા રહેવું, ગ્લોબલી આપણે બધાએ આગળ વધવા માટે જે કરવું પડે કરવું જોઈએ. એમાં સરકાર તમારી સાથે છે એ નક્કી છે.
કે તમારે ક્યાંય તકલીફ નહીં પડવા દઈએ અમે. તમે જેટલી તમારી તાકાત, અને અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ હું જયારે